वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं लुकर डेवलपर क्विक स्टार्ट लैब फ्रॉम आर्केड सर्टिफिकेशन जोन जनवरी। क्लिक स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हम लुकर को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। अब यहाँ एक लॉगिन का इंटरफेस खुलेगा जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड डालना होगा। सो आपका यहाँ पे दिया गया यूजर नेम ही आपका ईमेल है एंड पासवर्ड ये रहा। कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। क्लिक लॉगिन। देन आपके पास ऐसे लुकर का पूरा आईडी खुल जाएगा। Now on to the task one, we have to create a view. So before that, toggle the development mode on from here. डेवलपमेंट मोड पे क्लिक करने के बाद पूरी वेबसाइट रिलोड होगी एंड ऊपर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्लिक ऑन डेवलप एंड क्विक ई कॉमर्स। Next we have to create a view named user limited. राइट, यहाँ से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक क्रिएट व्यू। फाइल नेम में हमें ये एंटर करना है। नाउ क्लिक क्रिएट। ये हमारे पास आ चुका है। वापस आएंगे। अब हम व्यू फोल्डर को यहाँ से खोलेंगे एंड यूजर लिमिटेड व्यू को ड्रैग करके इसके अंदर ले जाएंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। नाउ नेक्स्ट हमें सबसे पहले ये इससे स्टार्ट करना है। कॉपी दिस, ऐड दिस इन लाइन 2। सेव चेंजेस। सो ये रही फाइल जैसे उसे दिखना चाहिए। हम इधर वापस आएंगे, स्लैश को यहाँ से रिमूव करेंगे। नाउ क्लिक सेव चेंजेस, वैलिडेट लुक एमएल एंड बिना किसी एरर्स के सेव हो चुका है। नेक्स्ट क्लिक कमिट चेंजेस एंड पुश। यहाँ आप कोई भी रैंडम मैसेज डाल सकते हैं। आई विल पुट cortex, click commit and then deploy to production. Now click check my progress. On to the task 2। हम मॉडल्स पे आकर ट्रेनिंग ई कॉमर्स डॉट मॉडल पे जाएंगे। Then we have to add this in the explore events definition just after join users. First find explore events, ये रहा explore events and हमें join users के बाद इसे ऐड करना है। ये रहा join users। Click enter and paste. Now save changes. Then click here, click explore events,
Now here under users limited, click first name and count, and then click run. Next, you have to go back there. So move this, go to develop, then QuickLab e-commerce again, and we are here. Now click validate look ML, commit changes and push. You can again write anything, like commit, and then deploy to production. इसके बाद आप check my progress कर सकते हैं, and इसके टिक हो जाने के बाद congratulations, you have completed this lab. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Also follow our WhatsApp channel to stay updated. The link is in description.